Welcome to DRTSPR show. This is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias DRTSPR. Namaste, Adab. Hello. What happened to Indian judges, Supreme Court of India, and the high courts all around India? What happened in COVID-19 pandemic? Now they are coming untrue. Why Supreme Court could not appoint or take the opinion of those honest, experienced in that health field? The same thing is being repeated when it has come to Aravalli forest or Hasdeo forest, or for that matter, the Sri Ramalingeshwara temple forest, how the forest, the temple land, endowment land has been changed in 2008, Ramalingeshwara Swami temple. RSS and Hindu organizations who support Modi are very silent. 2008, we have shown how they have changed it to forest land, and it has been given for naval radar in the national security. What is national security? National security means the aborigines who live in Vikarabad, Damagundam forest. That is not important. Is it not the people of Vikarabad's lives important? Is it not the Hyderabad, the southwest winds flow from there? If that entire forest is gone, Hyderabad is gone. I am challenging, we can discuss, because it is extreme low frequency radar. Whereas in Tamil Nadu, you have very low frequency radar. Can courts don't understand that? At least I am happy Telangana High Court asking them, where is the afforestation which you have promised in last 3 years? The death warrant has been signed by the then Chief Minister to destroy the spirit of Telangana movement. They did not want Hyderabad. It is a big conspiracy. This conspiracy has been continued by Modi government. I am challenging. We will discuss. Why BJP Telangana is silent? Because these lands belong to Sri Ramalingeshwara Swami, age old, from where the Musi Isa, the only river which flows through length and breadth of Telangana, takes birth in this forest. And death warrant has been signed by the Seemandhra Chief Minister. Now it has been upheld by the corrupt KCR. He has been caught hold of with so many scams. Why Revanth Reddy is not going ahead at that speed? That is the reason why they got only 63% panchayats. God knows, panchayats, municipalities should be fought on independent lines, not on party lines. Then that has been continued by Revanth Reddy, the Chief Minister. They say because of those scams with Chandrababu Naidu, are they blackmailing Chief Minister? He had to sign. In spite of the agitation, the same Congress-led agitation, they were all against, all parties were against there. So, what does forest mean? Forest means water. Forest means clean air. Forest means absorbing that heavy floods because of those trees which are there from thousands of years, hundreds of years. When it rains, the flood is stopped by these natural barriers called forests, and through the trees and all. That soil is rich, and when in that rich soil you have medicinal plants and all, when the water flows through that, you have seen Gandipet ki pani, Hyderabad ki shan, and then Vikarabad ki hawa, marizon ki dawa. Such forests are killed. And again, Rajendranagar biodiversity, 100 acres, they want permanent quarters for judges. How courts are acting? Why they don't appoint an experienced one? As this is not enough in this Hyderabad, now it has gone to Delhi, in between Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, everywhere they are removing forests for the sake of Adani. I am challenging Mr. Modi. Let us discuss. We have shown Shanti how you want to remove all barriers and get nuclear plants. That is why it keeps remember me, Brahmam Gari Adesham, కాలం అంతమైపోతుందా కలియుగంలో, మనం చెరువులను అటవీ ప్రాంతాన్ని నాశనం చేస్తేమి, మళ్ళా ఎక్కడ పడితే అక్కడ న్యూక్లియర్ ఫెసిలిటీస్ దానికి దారిస్తే ఏమవుతుంది అంతం కాక? సేమ్ థింగ్ Aravalli forest, it stretches from Gujarat, Narmada to Rajasthan, and how it is protecting and saving Rajasthan. It is a desert area, Rajasthan state. BJP is ruling, so it is BJP is signing death warrant for their own ruled state in the form of Modi and Amit Shah. They have amended environment and so many others. We have been complaining right from last 4 years. No one understood. Now see, these amendments are helping only
for the sake of mining to benefit Adaji Gujaratis. Gujarati rule for only Gujaratis. Come on, India, wake up. We are all there. So, like I've told you, if Damagundam forest goes, Hyderabad is gone. Same way, if Aravalli range forest goes, what will happen? The entire Delhi, Rajasthan, now it will spread to that region. They will suffer from the desert sand, that sand which comes. These Aravalli, they are protecting them. वो बचा रहा है अरावली फॉरेस्ट, जो वहां से वहां राजस्थान की वहां से जो आता है, वो मिट्टी की तूफान हो या कुछ भी हो, उसको रोकने में अरावली कामयाब है, जंगल। और वही अरावली से आज राजस्थान एक राष्ट्र वहां जी रहा है, और वो भी बीजेपी के शासित। लेकिन केंद्र शासित बीजेपी शासित राजस्थान को खत्म कर रही है, साथ में दिल्ली को भी ये खत्म कर रही है। क्या मैं नहीं बोल रहा हूं, लोग रोड पे आए। जिस तरह 3 कानून, किसान के कानून जिस तरह ला के वापस लेना पड़ा मोदी को, आज उसी तरह उनको लेना ही पड़ेगा। क्योंकि बिना जंगल के, जंगल माने क्या है? पानी है, हवा है, और वो जिस तरह हमको संरक्षण करता है। जब बाढ़ आते हैं, पानी की बाढ़ हो या वहां डेजर्ट की जो मिट्टी की बाढ़ हो, उससे सुरक्षा मिलता है, और साथ में पानी, पीने की पानी, और काफी लाभ जीने के लिए हम इस जंगल से पाते हैं। अगर इस जंगल को हम खत्म करें, जिस तरह साजिश दामागुंडम फॉरेस्ट और श्री रामलिंगेश्वर स्वामी की जो हैदराबाद को संरक्षित कर रहा, आरएसएस चुप है, तेलंगाना बीजेपी चुप है, लेकिन उनको जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि जब आप खिलवाड़ करेंगे नेचर के साथ, सहज सिद्ध प्रकृति के साथ, प्रकृति आपके ऊपर क्रोध होगा, और वो क्रोध जन विश्वास, जन आंदोलन के सहित जिस तरह उभर कर आ रही है अरावली में, वो छा जाएगा। कोई भी उससे अगर खिलवाड़ करे, वही हो रहा है अरावली में। कितना जन आंदोलन, कोई नहीं दिखाई दे रहा, कोई चैनल में ज्यादा आ रहा ही नहीं। लेकिन आज डर के मारे राजस्थान के बाद में दिल्ली खत्म हो जाएगी, वहां जीना ही मुश्किल। और आज भी देखिए हवा का किस तरह प्रदूषण है, वहां वहां जीना ही मुश्किल है। जब इस तरह मुश्किल समय में सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय किस तरह इस तरह की जजमेंट देती है, जो 100 मीटर के जो नीचे भी है उसको खत्म कर सकते हैं, वो इनको कहां से मिला? ये किस तरह की पहाड़ अगर 100 मीटर के छोटे हैं, उसको निकाल सकते हैं क्या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश? आप बोलिए, आप कहां से ये इसको लाया है? एक तरफ सहज सिद्ध जंगल को आप खत्म करना चाहते हैं, और एक तरफ अंबानी अंतारा का फॉरेस्ट, जो नया जंगल बन रहा है, वहां जू बन रहा है, वहां जो बाहर से ला रहे हैं वहां एनिमल्स को, और उसको ऊपर रोक नहीं लगाते। उसको आप ने किताब दे दी है, वहां पर कोई कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जो सहज सिद्ध वन है, उस वन को आप खत्म करने की किस तरह इजाजत दी न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट? एक तरफ अंतारा को आप बढ़ावा दे रहे हैं, आप खूब ही इसको बढ़ाइए, आगे जाइए। अंतारा, अंबानी, कितनी जमीन एक व्यक्ति को कैसा हो सकता है? सीलिंग क्या हो गया देश में? इतने 100 एकड़ कोई भी हो, कारपोरेट के नाम पे हो, किस तरह खरीद सकता है? जब हम जैसे जर्नलिस्ट, सुप्रीम कोर्ट ने नजरअंदाज करके हम जब पैसा लगाया 2012 को, हम खरीदे, उसको तो नकार ही दिया। आम आदमी 1 गज जमीन नहीं खरीद सकता। वहां अंबानी और अदानी जैसे लोगों को आप जमीन पे, हमारी जमीन जो हर एक नागरिक की है, उस जमीन की उनको कानूनी के तौर पर हवाला करना, क्या ये सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश का संविधान का हक का परिरक्षण है या उल्लंघन है? इज इट Supreme Court's decision to protect the interests of every citizen, the constitutional interests, their rights? The Constitution means citizens. How is that you are trying to kill Aravalli forest on one side, having measurements below 100 meters? Where is the science? Where is the logic? How can you kill a natural forest which is running across so many states, and which is the lifeline for the capital from where you are sitting and judging, and you are trying to give orders because of Aravalli range or not, my dear judges of Supreme Court? What is this ambiguity? You have given orders
wherein that mining can go on and on. Not just this government, 2011 onwards, even when Congress was there, and subsequently even when Vajpayee, during those periods also when BJP government was also there, they were mining heavily in Rajasthan. And a Havaldar who retired, he was protesting, enlightening people on the dangers of losing ridges small from where water runs, where it protects you from the sandstorms of desert, Rajasthan desert. Delhi is protected, Rajasthan is equally. And Rajasthan, lifeline, water, everything, livelihood comes from these Aravalli forests. How can Supreme Court be so naive, ignore all these things? Why it is not appointing honest environmentalists and citizens also from the common who understand what life is symbiosis of? On one side, it gives permission to kill those ridges below 100 meters, mountains. On another side, Supreme Court, see the ambiguity. They are trying to protect Ambani Amtara artificial zoo or forest. Animals which have been imported, their hue and cry internationally, but Supreme Court ignores that. They says nothing is wrong and no one should interfere with. Again, no one should come out with pills on Antara. See the ambiguity of Supreme Court of India. It should control. It should come to the rescue of Constitution, people of India and their resources. Resources are being handed over to two or three, Adani mining and forests and all in the form of Ambani. How can Supreme Court be silent? How these orders should be taken? That is why people are revolting, because when livelihood matters, when living becomes difficult, people will be on the streets. This is what they are going to do. Now, Supreme Court will be forced to take this back, as it was done in the case of 3 farm laws which the same government passed hitherto. I am doing this show with due respects to every citizen who understands nature, who understands living in symbiosis with forests. This show is dedicated to all of those wonderful evil. And I'll just start with playing both Supreme Court orders for India. That means people of India, their rights. It is their rights, not Supreme Court. The rights of the people, when they are in question, we will come to the rescue, because even our lives tomorrow, what is that we are going to give out to our kith and kin? How can these judges' families can survive so peacefully in that Delhi area itself if Aravalli is gone?
So I've shown you. Forest means not just water and all animals, different type of biospecies. This biodiversity will be there. Natural forests. Again, you are allowing Ambani forest to survive by importing animals and all. But how is that, Supreme Court of India, my dear judges? You are trying to destroy such forest which is inhabited by the rarest of species of such animals. Is this not ambiguity? Why? In whose interest? In whose interest? Supreme Court has to. Supreme Court on Monday cleared Reliance Foundation owned Vantara of all allegations of smuggling, money laundering, and violation of statutory laws in sourcing animals, and held that no court or administrative forum in the country will entertain any complaint or proceedings on these allegations in the future. Now, the order of the... See how Supreme Court is trying to support Antara Ambani artificial zoo and forest, and they have to create so many water resources there for the animals which they are importing. And it says no court will entertain this petition, my dear Supreme Court of India. Is Ambani and Adani running this country, or this country belongs to people, resources belong to every citizen? Supreme Court has to make it very clear. How can it say you should not interfere? Then how is that you are trying to define Aravalli below 100 meters can be mined? Are you not aware there you have such type of rare species of animals? Water is there, potential, those through small ridges, so many trees. If they go, that entire flood will engulf. And don't you think these act as barriers to protect you from sandstorms? And also, don't you think this is a lifeline, economy of lakhs of people? How can you do that? Court was based on a special investigative team's report chaired by former Supreme Court judge along with 3 other members who gave a clean chit to Vantara based in Gujarat's Jamnagar. Take a look at this special report. See, he is trying to show Antara Ambani's this thing in Gujarat, my dear Supreme Court judges, while forgetting Aravalli. What is Aravalli? Can any judge explain in Supreme Court? I invite them. My number is 9440465339. How can courts pass orders? Because even Telangana High Court did the same mistake in case of Damagundam forest. What is national security? Is it security of every citizen who is living there in near and dear Damagundam forest is not important? Security of Vikarabad residents not important? Security of Hyderabad citizens not important? Similarly, what about the security of Delhi, Rajasthan citizens? In a big relief for Vantara, the Supreme Court has said there was nothing wrong with the transfer of temple elephants to Reliance Foundation's animal initiative. While hearing a PIL challenging the movement of elephants to the wildlife facility in Gujarat, the top court said there's nothing wrong if Vantara takes over elephants from Forest Department as long as procedure is followed. The Supreme Court added that the SIT constituted by it... See, these elephants, these animals are being taken from the Forest Department. That means from forest, original forest. Now they are migrating it to the Vantara Ambani forest. How logical is this, Supreme Court? How can forest, every inch of land, every species, every resource belong to every citizen of India? See the ambiguity. Expressed satisfaction on issues of compliance and regulatory measures. The court also observed that all animal acquisitions, including imports, are backed by valid permits and multi-jurisdictional scrutiny. Vantara's conservating programs such as cheetah breeding, elephant rescue, and Spix macaw reintroduction were also highlighted by the Supreme Court as legitimate. Earlier, the Reliance Foundation had said it welcomed the probe and would extend full cooperation, reiterating. So my question to Supreme Court of India and all citizens, judges, how logic is this that you are saying Vantara Ambara, it is very, very, very valid, you are saying, and they are breeding species in their own control. Why? Then why this natural forest wherein this breeding happens
naturally. So many animals are there. Water flow is there. It is protecting and saving so many states. Why that is not important, valid for Supreme Court judges? How only Ambara has become valid? Antara Ambani has become. I just wanted to show you this. And let us straight away get into the subject proper of. Now I'll show you how the protests are happening across length and breadth of that entire region. Now it has to reach. The thousands are on streets, my dear judges, Supreme Court judges. It will not leave anyone. It will not leave anyone, mind you. It is the question of survival now. देखिए यार, जेसीबी चल रहा है, पूरा पहाड़ का स्ट्रक्चर हिल रहा है, 100 मीटर से नीचे का पूरा रेंज टूटने वाला है। वो देखिए उधर अभी टूटना स्टार्ट हो गया। अभी उधर देखिए, यहाँ सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे जेसीबी आ रहे हैं। जब एक जेसीबी चलता था तब भी खतरनाक लग रहा था, अब इतने सारे एक साथ आ गए। तो अभी जो हो रहा है ना, मुझे लग रहा है कुछ बड़ा होने वाला है। ये सिर्फ तोड़फोड़ नहीं है भाई, ये वार्निंग जैसा लग रहा है। सच बोलूं तो ये नेचर के लिए बहुत बुरा है यार। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अरावली बचेगा ही नहीं। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है भाई। अभी मैं अरावली रेंज के ऊपर हूँ। देखिए यार, जेसीबी चल रहा है, पूरा पहाड़ का स्ट्रक्चर हिल रहा है, 100 मीटर से नीचे का पूरा रेंज टूटने वाला। Just trying to show you how difficult it will be for you to understand. Such serene areas. See the beauty of Aravalli. What happens if the entire thing is gone? Now see the journalists, what they were speaking before and what they are trying to. एक बड़ी वजह है, दिल्ली की आकृति एक कटोरी की तरह है जो 3 तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरी है। इसीलिए प्रदूषित हवा दिल्ली में कैद हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। इसीलिए दिल्ली के पोल्यूशन का इलाज न तो एक दिन में हो सकता है, न एक सीजन में। इसके लिए भौगोलिक स्थिति। Our Aravalli is, देखिए, how many years old and Modi is barely 75. Now this gentleman says the air is trapped in Delhi. बाहर नहीं जाती, लेकिन जब बाहर से तूफान, अगर मिट्टी के तूफान, सैंड के तूफान, सैंड डेजर्ट से आया, उससे आप बच पाएंगे माय डियर जर्नलिस्ट? तब क्या होगा? और भाड़ जब पूरे अरावली की रेंज कट हो जाएगी, पूरे पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, पानी किस तरह अंदर आएगा? So I'm just trying to play. एक बड़ी वजह है, दिल्ली की आकृति एक कटोरी की तरह है जो 3 तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरी है। इसीलिए प्रदूषित हवा दिल्ली में कैद हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। इसीलिए दिल्ली के पोल्यूशन का इलाज न तो एक दिन में हो सकता है, न एक सीजन में। इसके लिए So he is blaming Aravalli for pollution. So what he was trying to say before, is this the one? No, not. That also I'll try to show you. Because I have to show you, leave Delhi as soon as air pollution does not affect your lungs. Health and AQI is baseless, said our Indian government for Delhi officially in parliament. See. Next word, cigarette doesn't cause cancer. They can say that also tomorrow. No, this is what he said before. He is blaming Aravalli for pollution of Delhi NCR. He says Delhi's surrounding mountains trap air pollution, making it hard to disperse, but not other causes. First gave Hasdio, Chhattisgarh to Modi, to Adani, Modi. Then Bhagalpur at ₹1 per acre. It's shaming India in front of everyone. Now gave Andaman Nicobar project to Adani. And now the plan is to give Aravalli. Gujarati for Gujarati. Wake up India. Now
It is a turn of RSS, otherwise people will not forgive you. So many videos. So many. So many videos, which I cannot share so many. यहाँ पर अरेस्ट होने के लिए दस्तों की जंगली बच जाता है। So there are many videos are there, because I have to wind up this show a bit earlier. Here is the one. कसूर किया कि वो जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है? उन्होंने क्या गुनाह किया कि दिल्ली में रहने वालों की उम्र 10 साल कम हो गई है? इसका जवाब केजरीवाल को देना होगा। भौगोलिक स्थिति एक बड़ी वजह है। दिल्ली की आकृति एक कटोरी की तरह है जो 3 तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरी है। इसीलिए प्रदूषित हवा दिल्ली में कैद हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। इसीलिए दिल्ली के पोल्यूशन का इलाज न तो एक दिन में हो सकता है, न एक सीजन में। दिल्ली में रहने वाले भी इंसान हैं, वो भी टैक्स देते हैं। उन्होंने क्या कसूर किया कि वो जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है? उन्होंने क्या गुनाह किया कि दिल्ली में रहने वालों की उम्र 10 साल कम हो गई है? इसका जवाब केजरीवाल को दे। Now Kejriwal has to give. Now they say Aravalli after BJP came to power. So this is how the ambiguity is surrounded. So many videos, so many videos. They change laws, forest laws. See, this I'll try to show you how the entire thing has happened. They change environment laws in Jharkhand for Adani's power plant. They changed forest laws in Chhattisgarh for Adani's coal mines. They brought new farm laws for Adani. They changed definition of Aravalli Hills for Adani. They reformed nuclear bill for Adani. They gave Adani 1,000 acres of land in Bihar for just ₹1. They changed airport rules for Adani. They gave 50,000 crore of LIC money to Adani. Is this? Many favors were given to Lowly Chaiwala. Even he would have become India's richest person. When government offers such type of largesse, anyone can become rich. Many videos. आगे आ गए तो मैं आपको बता दूं कि रोकने के लिए आपका सिस्टम फेल हो जाए। वो मजबूत लोग हैं जो 75 और 61, 65 और 71 की लड़ाइयों में जिन्होंने अपने सिर दिए, उनको हल्के में ना आंकें, उनके साथ इस तरीके का अत्याचार ना करें, उनकी जमीनों को कौड़ियों के दाम पर आप मल्टीनेशनल कंपनियों के चरणों में न दें। मेरा पुनः आप सभी से निवेदन कि आप उनकी पीड़ा को समझते हुए ये जो अनैतिक ढंग से जो लैंड अलॉटमेंट हो रहे हैं, इसको पूर्ण तरीके से आप बंद करें, उन सीमांत के लोगों के साथ न्याय करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। So there are many videos and I'm trying to limit to
This is the game, and guess. India's biggest carbon farm, Vantara, 3,000 acres of trees, lakes, and greenery, each generating tradable carbon credits. When other cut forests, Ambani's forest will mint money. Supreme Court, you have to answer. Now, let me dedicate this beautiful video to all. नमस्कार, मैं दिलीप जैन हूँ। मेरा जन्म अरावली की गोद में हुआ। मेरी ट्रेनिंग हिमालय की चोटी पे हुई और मेरा काम अधिकतर सह्याद्री की वादियों में है। इतने साल पहाड़ों में रहने से ये तो समझ आया कि नदियों का उगम पहाड़ों में होता है, जंगल भी पहाड़ों पर पनपते हैं और जानवर भी अधिकतर पहाड़ों में रहते हैं। तो क्या पहाड़ जीवित है? आर माउंटेन लिविंग बीइंग? सालों से कई लोगों को पूछता आ रहा हूं। एक और मॉडर्न एजुकेशन से इन्फ्लुएंस लोग कहते हैं कि पहाड़ों में जान नहीं होती। गूगल और चैट जीपीटी भी यही कहते हैं। दूसरी ओर बड़े बुजुर्ग या अनपढ़ आदिवासी और पुरानी संस्कृति साउथ अमेरिका के इंका से लेकर जापान के शिंटो तक और हमारा जैन धर्म भी पहाड़ों को जीवित मानता है। पहाड़ लिविंग से नॉन लिविंग कब और कैसे हुए? कौन सही है? ये प्रश्न का जवाब ढूंढने के लिए पिछले कुछ सालों से मैंने 5,000 किलोमीटर लंबी रोड यात्रा की पूरे अरावली पर्वतमाला की, दिल्ली से गुजरात तक। ये अरावली पर्वतमाला इतना ब्यूटीफुल है। अभी हम लोग रोडानिया गांव कातर अजमेर में है और देख सकते थे कितना मस्त छोटा सा तालाब है, पीछे इतने सारे बर्ड्स है। तो अरावली का एक्चुअली बहुत सारे तरीके से इंपॉर्टेंस है। एक तो ऑब्वियसली दिस इज द एंशिएंट जियोलॉजिकल फीचर ऑन द अर्थ। सेकेंड, पूरे नॉर्थ इंडिया में एक तरफ हिमालय है जो पानी देता है, दूसरी तरफ अरावली है जो रेगिस्तान को एक्सपांड करने से बचा रहा है। थर्डली, पूरे राजस्थान जो डेजर्ट है वहां का वाटर का जो सोर्स है या वाटर का जो जगह है जहां से वाटर एब्जॉर्ब होता है जमीन में, वो अरावली के कारण है। क्लाउड्स, बारिश, जंगल और जानवर सारे अरावली के कारण है। वो नहीं रहेगा तो राजस्थान में जो बचा कुचा हरियाली और नदी और नाले है कुछ नहीं बचेंगे। इतना महत्व होने के बावजूद भी कई सारी जगह पर अरावली भूकंप क्षेत्र जैसा लगता है। आप उदयपुर के रंगीले चमचमाती होटलों से केवल 10-20 किलोमीटर बाहर चले जाओ तो यह दिखेगा। वास्तव में ये सब माइंस है, यानी खदानें हैं। इस बर्बादी का कारण भ्रष्टाचार और अवैध खनन तो है ही, पर इससे भी बड़ा कारण है हम सब बड़े शहरों में रहने वाले लोग की लाइफस्टाइल है, जिसमें हम चीजों को बेझिझक खरीदते हैं, वापर करते हैं और फेंकते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉली रतेश्वर। मैंने बहुत कुछ सीखा एजुकेशन सिस्टम से, अपने सोसाइटी से और आजकल इन्फ्लुएंसर्स और मीडिया से। मैंने सीखा कि सोप, शैम्पूज, फिनाइल अच्छे से और ज्यादा वापरने से बीमारियां नहीं आती। मैंने सीखा कि घर में 4 टीवी हो और लिविंग रूम में चमकता हुआ मार्बल हो तो अच्छा लगता है। मैंने सीखा कि इलेक्ट्रिक ईवी गाड़ियां पर्यावरण के लिए सही है और मैंने ये भी सीखा कि कपड़ों से मेरी इमेज बनती है। मैंने सीखा कि लाइफ का मकसद कमाना, खाना, पीना और ऐश करना होता है। और सबसे बड़ी बात मैंने सीखा कि पहाड़ों में जान नहीं होती। क्या ये सब झूठ है? क्या ये सब इसलिए सिखाया जाता है ताकि हम इसको सच मानने लगे? अरावली भ्रमण के बाद मेरे दोस्त दिलीप जैन ने मुझे कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई। इंसान के जीने के लिए जो भी आवश्यक चीजें हैं जिस पर इंसान का जीना निर्भर करता है, वह धरती के ऊपर आसानी से मिल जाती है। चाहे वह तेल, पानी या हवा दवा हो, फल फूल या पशु पक्षी हो। ये वस्तुएं प्रकृति कुछ महीनों या फिर कुछ सालों की साइकिल में खुद ही रिप्लेनिश कर देती है। इनको पाने के लिए हमें कोई खास मशीन की भी जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी ओर इंसान के जीने के लिए जो भी चीजें आवश्यक नहीं है वह आसानी से मिलती भी नहीं है। ये चीजें हाईटेक मशीनों से बनती है, जैसे कि एसी और फ्रिज, मेकअप और ज्वेलरी, गैजेट और एयरप्लेन, सीमेंट और स्टील। ये वस्तुएं बनाने का सारा रॉ मटेरियल प्रकृति से ही प्राप्त होता है। ज्यादातर माइंस में से ही
जी हाँ, हमारे लग्जरी के वस्तुओं का सामान पहाड़ों को खोद कर निकाला जाता है। प्रकृति ने इनको बहुत गहरी तरह से छिपा कर रखा है। शायद वो नहीं चाहती कि हम इसका इतना ज्यादा इस्तेमाल करें। हमारे प्रोग्रेस का कारण है कि हम बहुत नीचे खोद सकते हैं और बहुत ऊपर भी बांध सकते हैं, पर जमीन से नाता टूट सा गया है। इसलिए बेसिक नेसेसिटीज के लिए भी हमें सरफेस रिसोर्सेज संभालने की कोई चिंता नहीं है। अब जब तक हाथ से काम करते थे, तब तक इंसान का रिश्ता था प्रकृति से, पर वो अब तेजी से कमजोर हो रहा है। अब हम एक और पहलू को देखते हैं। माइनिंग से लोकल लेवल पर क्या प्रॉब्लम्स होती है वो समझते हैं। एक एक्सकवेटर को 1 एकड़ जमीन से 400 पेड़ निकालने में 2 आदमी, 10 दिन और 1 लाख रुपए लगते हैं। वही दूसरी ओर 1 एकड़ पर 400 पेड़ लगाने में और उनके बड़े होने तक ध्यान रखने में 2 आदमी 5 साल और 10 लाख रुपए लगते हैं। प्रकृति को उभारने में सालों साल लग जाते हैं, पर उजड़ने में केवल कुछ क्षण और एक मशीन ही काफी है। माइनिंग के कारण एक पौधा या एक जानवर नहीं, बल्कि सारे फ्लोरा और फौना का हैबिटेट भी खत्म हो जाता है, हमेशा के लिए। ये वेस्टेज मार्बल जो निकाला गया, उसका जो वेस्टेज है, वो ये जगह जगह डालने की वजह से माइनिंग से जो जमीन खराब हुआ जो हुआ, लेकिन डंपिंग करने से और उससे कहीं गुना मतलब पोल्यूशन हुआ, जमीनें खराब हुई है। जब धरती खोदते हैं तो पानी पर भी बड़ा असर पड़ता है। पहले जहां 40 फीट पर पानी मिलता था, वहीं अब 400 फीट पर पानी मिलता है। ये जो पानी दिख रहा है, ये पानी पंप से बाहर फेंक दिया जाता है। वो पानी खाली करने के पर्पज से बाहर फेंक दिया जाता है, जो पानी बेकार हो जाता है। पूरा पानी अभी अपन देख रहे हैं तो ये कम से कम 30 फुट गहरा है। 30 फुट में नॉर्मली कुएं हुआ करते थे पहले, और 30 फुट के कुएं से हम खेती करते थे और हमारा जीवन चलता था। आज हर जगह लोगों ने फिर वो हैंडपंप लगाना और बोर करना शुरू कर दिया, जिससे आज की तारीख में गरीब के पास में पानी ही नहीं। पानी का जो निजीकरण हो गया, जो सार्वजनिकरण था वो निजी में बदल गया। पूरा व्यक्तिगत जो पावरफुल आदमी है उसके पास में पानी है, गरीब के पास में पीने का पानी भी नहीं है। तो पानी नहीं है तो बकरीवासी कौन करो? कड़ी कूड़ा वावड़िया तो बटे लेन जावा। हाँ, तो भाटा गाड़े तो अच्छा है कि नुकसान है? नुकसान ही है ना, नुकसान तो है। कौन नुकसान है? नुकसान तो जनावर गणा रेवा लगी जात। हाँ, बड़ी बात है। हाँ, ने फायदा है कोई? फायदा तो खान भाटा गाड़वा वाला फायदा भी। क्या मजदूर लोग पहले काम किया करते थे, 100-200 मजदूर काम करते थे, लेकिन आज के युग में मशीनीकरण हो गया है तो पूरा काम मशीनों से होता है। लोगों को सिलिकोसिस जैसी फेफड़ों की बीमारी होती है और एस्बेस्टोस से कैंसर होता है। माइनिंग साइट्स पर बेसिक सेफ्टी प्रिकॉशंस, मेडिकल फैसिलिटीज या टॉयलेट भी नहीं होते हैं। आवाज से तकलीफ और एक्सीडेंट्स तो रोज ही होते हैं। वहां पर रहने वाले लोग सदियों से अपने गांवों में खुशी से स्वावलंबन में रहते थे। खुद का खेत, खुद के भेड़ बकरियां, खुद के मालिक। अब कैश तो आ गया, पर पूरा घर और गांव चला गया, और अब वो शहरों में रेफ्यूजी लेबर की तरह ठोकरें खा रहे हैं। यह कैसा विकास, किसके लिए, और इसका फायदा किसको? जरा सोचिए। 2 टाइप के माउंटेन दिख रहे हैं, थोड़े ग्रीन है और दूसरे ऊपर व्हाइट है। तो ये सिंबल है आज के हमारे हाइपर कंज्यूमरिस्टिक लाइफस्टाइल का। तो एक तरफ गांव में जमीन, जल, जंगल बर्बाद हो रहे हैं और जिससे जानवर और लोगों को रहने में दिक्कत हो रही है, और दूसरी तरह यही सब रॉ मटेरियल यूज करके सिटीज में बिग स्केल पे हाउसिंग डेवलपमेंट, एफएमसीजी कंजम्पशन और हमारे जो डेली नीड्स है, जो मोर देन रिक्वायर्ड है, हम जो कंज्यूम कर रहे हैं, उससे वहाँ के जो एनवायरनमेंट है, रिवर्स है, एयर है और बड़े बड़े जो गार्बेज जंप यार्ड्स है वो बन रहे हैं। तो हम गांव भी बर्बाद कर रहे हैं, सिटी भी बर्बाद कर रहे हैं। अब देखते हैं ग्लोबल इम्पैक्ट क्या हुआ पिछले 70 सालों में।
1950 से 2020 तक दुनिया की आबादी 3 गुना बढ़ी और इन्हीं 70 सालों में दुनिया में प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, लोहे की खपत 70 से 250 गुना बढ़ी। यातायात, व्हाइट गुड्स, सीमेंट की खपत 40 से 70 गुना बढ़ी। गौर की बात यह है कि आबादी जब 3 गुना बढ़ी तो बाकी सारी चीजों की एक्सट्रैक्शन, प्रोसेसिंग, कंजम्पशन और वेस्ट 40 से 250 गुना कैसे बढ़ा? इसका जवाब बहुत सीधा है, वेस्टर्न मॉडल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। और न भूले, ये सारी चीजें धरती से आती है, कभी जमीन तोड़कर, कभी पहाड़ काटकर और कभी समुद्र खोदकर। Currently, growth means grabbing and development means destruction. यहाँ पे growth और development दोनों नहीं है, so there is no grabbing, there is no destruction, and therefore ecosystem is so good. मोबाइल से हवाई जहाज, कंस्ट्रक्शन मटेरियल से लेकर डायमंड, कॉस्मेटिक से लेकर सारी एक्सेसरीज, रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी चीजें हम वापरते हैं वह पेड़ पौधों से या जानवरों से या फिर माइन से आती है। नो वंडर पिछले 70 सालों में दुनिया से 70% बायोडाइवर्सिटी खत्म हो चुकी है। पिछले 70 सालों में 420 मिलियन हेक्टेयर के बराबर जंगल नष्ट हो चुके हैं, जो कि साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट के बराबर है। एक इंसान खुद के अनुभव और शिक्षा से जीवन की समझ बनाता है, लेकिन आज डोमिनेंट नैरेटिव का इतना बड़ा प्रभाव है कि हम सब पर भी हमारी अपनी खुद की समझ नहीं चलती। चलो मैं एक फॉर्मूला समझाता हूँ जो शायद काम आए। सबसे फर्स्ट लेसन तो मुझे लगता है कि ये इक्वेशन होना चाहिए एनवायरनमेंट का, जो कि है कि जमीन इंटू जल इंटू जंगल इंटू जानवर इज इक्वल टू ह्यूमन का जीवन। और अगर ये इक्वेशन में कोई भी नंबर, सपोज जमीन और जल आधा आधा होता है, तो जंगल आपका 1/4 हो जाता है। धर्म के एंगल से देखे तो प्रकृति ही भगवान है। इनफैक्ट भगवान शब्द ही बना है, ब से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से आग और न से नीर। दुनिया की सभी सभ्यताएं में पहाड़ों को देवता की तरह पूजा जाता था। हमारे बड़े बुजुर्ग और सारे धर्मों के गुरुओं ने फिजिकल मटेरियल नीड्स को कम करने की सलाह हमेशा दी है, पर आज हम अपनी परंपराओं को भूलकर एक ऐसी रेस में लगे हैं जो हमें ही जलाकर राख कर रहा है। क्या भारत के नेचुरल रिसोर्सेज भारत के बढ़ती हुई आबादी के लिए काफी है? अगर हम सब अमेरिकन लाइफस्टाइल फॉलो करने लगे तो सभी का भला कैसे हो सकता है? सही बात, वो चीज अंदर होनी चाहिए। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग अर्थात मिनिमलिज्म कई समस्याओं का समाधान है। महात्मा गांधी से लेकर हमारे प्रधानमंत्री तक सभी लोग पर्यावरण के लिए अपनी जीवन शैली का बदलाव करने की सलाह देते हैं। मेरे लद्दाखी दोस्त सोनम वांगचुक पहाड़ों से हम शहरी लोगों को कई सालों से आई लिव सिंपली की अपील कर रहे हैं। Please live simply in the big cities so we in the mountains may simply live. Please live simply. तो क्या पहाड़ जीवित है? Are mountain living beings? So this is a beautiful thing, which I thought I'll just try to share it with you. Then we'll go to the final aspects. I'll try to show you what Modi has been doing across the globe. The Prime Minister, Honorable Prime Minister Modi, see, PM Modi planting saplings in Ethiopia to save the environment. But here, why allowing Adani to destroy Aravalli and Hasdeo forests in India? He is saving environment, to save the environment, planting saplings in Ethiopia, while same Modi allowing Adani to destroy Aravalli and Hasdeo forest in India. See the ambiguity, the politicians. So Supreme Court wants to destroy this. Yeah.
Yeah, I have so many other videos. I'll not be able to. I'll do it in the second. We'll do it in series. The straight away question to Supreme Court of India. When Modi, Gujarati government, Modi and Amit Shah is for only Gujaratis, Adanis and Ambans. Now Supreme Court has to make it very clear to every citizen of India. While you said there should be no pills across India, including Supreme Court, in all high courts, when you gave a decision trying to say protect the wildlife in Antara Ambani in Gujarat. They artificially created 3,000 acres of land, forest, they say. How an individual can sow so much of land. And you have seen there also animals from forest department can go to Adani, Ambani, Antara. When such is the case, my dear judges, Supreme Court of India, how can you allow to destroy Aravalli, which is also home to various animals, rich biodiversity? The entire forest, as you said, forest department to Antara, but the entire forest, Aravalli forest, has got so many species of different animals, rich biodiversity. So many animals. But how is that? Supreme Court has given an order wherein all those below 100 meters, ridges and all, can be mined. Is this not ambiguity? How can the measurements, when it comes to Ambani and when it comes to Aravalli, Adani, you are benefiting only A square Adanis and Ambanis at the cost of the people of India, the Constitution of India, and their rights over their resources. And in doing so, the entire Delhi, right from Rajasthan, Haryana, Gujarat, are also in danger now. Naturally, nature-wise. So I only hope the way Modi government was forced to take back those 3 farm laws, now Supreme Court of India also will understand and will definitely go back on such decisions. And it will also go into the scrutiny of all those amendments made to environment and forest laws too, so that what is happening across India, including the Hyderabad, Vikarabad, Damagundam forest in the name of national security, when security of individuals, Constitution of India, whether that matters or just those national security matters, or just for the sake of mining to be allotted to Adani, can you compromise Aravalli forest at the cost of our own living? Tomorrow, where should our family go if Aravalli like forest, Damagundam like forest, Hasdio like forest across India start disappearing from the map? Can you create a natural forest, my dear Supreme Court judges of India? Similarly, the way you gave a judgment, immunity to Antara Ambani forest, that no more pills should be accepted across India in all high courts, including Supreme Court. How is that Supreme Court is just going back on its own commitment to save forests and animals when it comes to natural forests across India, including Aravalli? I only hope this should be an eye-opener. Anyone, any objection? My number is 9440465339. I'll connect you from wherever you are, provided you have all these type of evidences, legal evidences, and the show runs as per rule of law, Constitution invoking Evidential Act, with no enmity against individuals, nor animosity against parties or organizations. And here they have referred the forest to Bhagwan. Now it is up to RSS also to take lead to protect Aravalli and to stop destruction in Damagundam forest. The entire land belongs to Ramalingeshwara Swami Temple. Thank you very much. Do support DRTSPR channels, Citizens DRTSPR channel, and Environment People DRTSPR channels. They are all in larger public interest only. Jai Telangana and Jai Hind.